A very good morning, all of you. My name is Vinay. I am director at a company called Litwork. Today, in next 20-30 minutes, we are going to spend some time together. I hope students are joining. Maybe we would take a minute, 1 minute, 2 minute before we go live. During this time, let me share my screen so that students can see. I'm sharing my screen and I would wait for 1 minute, 2 minutes so that most of the students can join and we can go live. So, Nikhil, if anyone can confirm by typing in the chat that if my screen is visible, I'm sharing my screen. It's Or visible, sir. visible? Perfect. So we would wait for another 1 minute, 2 minute because student must be joining this live stream and we would go live. Meanwhile, students who have joined, I would love to connect with all of you on the LinkedIn and grow our professional network. On the screen, you can see my QR code. You can scan this QR code and we can connect on LinkedIn. Rest assured, by the end of this presentation, whatever slide which I'm presenting now, it would be shared with each one of you through Yogesh sir. So let's begin now. As I introduced, my name is Vinay. I am director at a company called Litwork. I carry 14 years of experience. In next 20 minutes, 20 to 30 minutes, we would unfold uh, the strategies through which you can ensure your campus placement when you would come to final year. What got your seniors placed might not work for you tomorrow because the market dynamics are changing. So, with this note, let me run a small polling. So, this polling would help me understand how many of you have joined and how many of you are actively listening. So, I request you to take out your mobile phone and kindly scan this QR code. And I would like to ask a couple of questions to my lovely audience. See, whatever we are going to discuss today, it is going to revolve around one common goal that when you come to the final year of your engineering and when the campus placements start, each one of you should have at least one or two offer letter. This is what we are going to discuss how we make this dream a reality. So please take out your mobile phone and scan this QR code. I would take 15 seconds to wait. Right. I'm assuming that the live audience have scanned this QR code. My question to this audience is, uh, according to you, which sector is known for maximum placement? I know there are students from second year, third year, and final year on this stream. There would be students from civil engineering, mechanical engineering, multiple other department. But what, according to you, in which sector the maximum bulk hiring happen? I can see only seven participants so far. So it's increasing. It has become 11. No worries. What we would do, I know a lot of students have not joined. The recording of this session would be shared with everybody. So far 14 have scanned the QR code and they are able to participate in this polling. Interesting. Okay, now let me go to the next point. 16 have come. Very good. 17, excellent. Sure. So let's move on. So very clear that if the maximum campus placement happens, then it happens in the IT sector. Now let me ask a next question to my lovely audience. Let's come to the conclusion that if the maximum placement would happen in the IT sector, then what according to you is relatively more challenging? Is it getting the opportunity or cracking the process, selection process? Excellent. So still three responses so far. So whichever colleges I have gone and presented, this has been the uniform challenge which students have highlighted is getting the opportunity is relatively easy, but cracking the selection process in the current time is becoming relatively more difficult. I would not deny the fact that both are challenging, but
cracking the placement process is considered to be more challenging. So far 12 live participants are participating this in this poll. 14. Okay, 36% of the participant feel getting the opportunity is the challenge. I'm completely with you that because after pandemic the market has not picked up, and the number of opportunities have reduced in the market, number of vacancies have reduced in the market, so on. Good. Now let me ask you next question. Let's say majority of the audience feels that cracking the placement process is difficult. Now let's explore what makes you think so. If I go 15 years back, and here what I'm trying to ask you is what makes you think that clearing the selection process is challenging? Because if I go 15 years back when I was doing engineering, I was completely confused. Because when it comes to preparing for any government sector exam like NDA, CDSC, or any entrance exam, the test structure was clear, when to start, when to stop. Very nice changing market trend. Because as a student I was very clear, if I was preparing for a government sector, what would be the syllabus. But when it comes to campus placement, there is lot of confusion, there is lot of competition, people say lack of skills. So I want to understand from the active participant of this streaming, what makes you think that cracking the selection process is a challenge? Okay, three participant, three responses, and these are bang on. Excellent. Changing market trends and the rise of AI. Very good. Data structures and algorithm, lack of skills and DSA, a lot of competition. Completely with you. कंफ्यूजन ऑफ विच स्केल. बच्चे पूछते हैं कि जब भी हम कॉलेज में जाते हैं कि किस चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ की तैयारी ना करें. हर कंपनी का प्रोसेस अलग है. लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन इट कम्स टू द कैंपस प्लेसमेंट. Good, 10 participants. See, the words which we can pick up from this whiteboard is lack of skills, changing market trends, and the rise of AI. So I would stop sharing my screen. These inputs are well enough for us. So what I would do now, let's pick up these words: changing market trend and the rise of AI, lack of skill, what to prepare, what not to prepare. So with this information, we also went to the companies, because ultimately the answer to these questions lies with the corporate. When the campus placement would begin, companies would come to the campus, and we also went to the companies with the same questions. We did a survey on the top 50 bulk recruiter product companies in the market, and the finding of that survey was as visible on the screen. So when we reached out to the top companies talent acquisition head, the person responsible for campus placement, we asked them what are the top four skills they look at in the candidate when they go for the campus placement for IT roles. And these were the top four skills which company called out. 92% of the companies said that cognitive ability is going to play a critical role 15 years back, and for coming 10 years also cognitive ability is going to play a critical role. But the way cognitive ability is being looked at, it has completely changed. When I was doing engineering 15 years back, my cognitive ability was tested through a traditional aptitude test, whether I can learn the formula and with the help of formula can I solve the problem. But in the current time, the cognitive ability is being assessed uh, in a different manner. It focuses on a student's ability to learn, unlearn, and relearn. Because in the age of AI, when you would join the company, within the company, your roles would change, technologies would change, tools would change. So your ability to learn, unlearn, relearn is a true indicator of your on the job performance. The second important ability is strong coding ability. See, I always wish that if there is civil engineering students, mechanical engineering students, triple E student listening to this presentation, I wish that, and I am completely with you, that you should make your career into your core stream. But in case the opportunity is not as desired, then there is no harm in starting your career in the IT field also. Because in the age of AI,
English is the hottest programming language. So you can keep plan B as your career path in the IT field. And if anybody, whether he or she is a CSC student or a civil engineering student or a mechanical engineering student, if you want to make a strong career in the IT field, then strong coding ability is must. But it has also changed. The way companies are now looking at the cognitive ability, it has changed. 10 years back, 3 years back, 4 years back, companies were okay if you can write the accurate code. But with the AI transforming the future of work, roles in the industry, writing the accurate code is not enough. Companies want a candidate to write a quality code, because if it's a matter of writing the accurate code, they can deploy AI agents. You must have heard the newspaper. There was an article in the newspaper. TCS has onboarded a lot of AI agent, and which can automate the entry level work which a fresher used to do, which was writing the accurate code. So if you want to make a strong career in the IT world, then start learning how to write a clean code. This is 74% of the companies said. 62% of the companies said the ability to analyze the code, identify the error, rectify the error, and further enhance the performance of the code is called code improvement. This particular ability is very critical in the age of AI. When you would join the company as a fresher, they would not ask you to write your code starting from scratch from day one. You would be working on somebody's else code. You would be working on code generated by AI. So your ability to look at the code and further enhance the given code is very critical. So 62% of the companies said it is a critical skill. Fourth was design thinking. 68% of the companies said that design thinking, which is essentially your problem solving approach, is a critical thing. Because AI is like a जादू की छड़ी. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जादू की छड़ी से क्या करवाना चाहते हो. नाउ यूजिंग एआई डज नॉट मीन कि चैट जीपीटी पे गए और आपने अपने असाइनमेंट्स सॉल्व कर लिए. It's beyond. Using AI, working along with AI is your ability to solve the complex problem using a design thinking. आप कितने अच्छे prompt लिख सकते हो. It would be your biggest differentiator when you would join the company. Somebody who is good at prompting, somebody who is good at design thinking, they are 10x more productive as compared to somebody who has not mastered this craft. So these are the four critical skills which companies are looking at. On the right hand side, you see a couple of colleges across India we work with. From Maharashtra, we work with DJ Sangvi College, Mumbai, Rai Soni Group of Institution, Pune and Nagpur. We have BITS Pilani, Hyderabad, Goa, VIT Vellore, ITM, DIT, and multiple other progressive colleges of India are our partner. Now let me show you. I started my presentation with a statement that the strategies which worked for your senior might not work for you tomorrow. When it comes to the campus placement, it's full of confusion, competition, and we feel that there are lack of skills. Now let me show you how students from these other colleges with which we have partnered, they are preparing for that unpredictable market. So now, if so, I'm now going to present to you that these are the skills which I have told you. Now, if I ask you that today, if I ask you tomorrow TCS comes to our campus, how many of you would be able to clear TCS round? If I ask you if Infosys comes to the campus tomorrow, how many of you would be able to clear Infosys round? Do you know if you want to clear Microsoft's screening test, the first round of the assessment, how much you should get in coding, how much you should get in cognitive? Because until we would not measure, we would never be able to improve. So if you want to prepare for your upcoming campus placement, the first step would be measurement. And the measurement should happen through the right tool. So moving forward, whatever I was explaining you, there are enough testimonials of these available in the market. I talked about TCS AI agent. I talked about the students' ability to analyze the given code and further enhance the given code. Sam Altman says that in companies, 50% of the coding is done by AI. We have seen adoption in institution also. Triple IT Delhi
has allowed the students to use ChatGPT in the examination. So market dynamics are completely changing. Now, I asked you a question that if tomorrow TCS comes to the campus, how many of you would be able to clear? If Infosys comes to the campus, how many of you would be able to clear? So, the progressive colleges which you have seen, the students of those colleges assess themselves on litcoder. They assess themselves, they assess their current industry standard on the litcoder, and through this litcoder assessment they would come to know what does it take to clear Infosys exam, what does it take to clear TCS exam. For example, all the assessments which I'm going to explain you now, show you in the subsequent part of the presentation, they are benchmarked. What is the meaning of benchmark? For example, if I say my blood pressure is 110 by 140, you would say it's a high blood pressure, because you are comparing my blood pressure reading with the scientifically driven benchmark, which is 80 by 120. So 80 by 120 becomes the benchmark, and my blood pressure becomes the my reading, and then we come to know is it a high blood pressure or a low blood pressure. So every assessments which we offer under litcoder program, they are benchmarked. For example, using our assessments benchmark, we can tell which student would be able to clear, what does it take to clear TCS category 1 round, one category opportunity, what does it take to clear TCS category 2. For example, if you want to crack a 10 lakh rupees job, then here I would explain you. Now, if any student who is able to get, let's say, 65% in cognitive, and let's say the cognitive skill which I've talked about, and let's say they are able to get 79 or 75% in coding skill, their chances of clearing a 10 lakh rupees job is high. If any student is getting, let's say, around 59% or 55% in cognitive, and let's say 70% in coding skill, their chances of clearing a pay package of 6 to 10 lakh rupees is high. So this is how you would come to know that if I appear for the litcoder assessment, what are my chances to clear rounds for different company and pay packages. Now let me show you how do we measure it, because if we have to measure it, then it has to be measured through a scientific tool. Now what we did, we created a group of people, experts from assessment industry, experts from IITs, NITs, triple ITs, academia, and experts from corporate, and we created a 360-degree framework which measures the true developer proficiency required in the age of AI. So we start with measuring the coding proficiency of the student, because in the survey report which I have shown you, if you want to make a strong career in the IT field, coding proficiency is critical. There are other platforms in the market which you must be practicing on, like litcode, like LeetCode, HackerRank, HackerEarth, CodeChef. There are multiple platforms which are really good platform if you want to practice only code accuracy. But industry has gone beyond code accuracy, and they are now focusing on code quality. Because in the age of AI, with the help of a prompt, you can write a accurate code. You write a prompt, you give the prompt the test cases, and the tool would generate, the AI tool would generate a accurate code. Where the human skill would play a critical role is your ability to write a universally appealing code, the optimized code. This is where code quality comes into the picture, and we are India's first platform which measures the code quality on 16 different code quality parameter. Now let me quickly show you a report. Now, here is the sample report, and with the help of report, I would explain you what is this code quality. So let me zoom. Let's say Aditi is one of our friend from Sihangar Group of Institute. Aditi has 90%. We would celebrate, because this is what we would do on other platforms also. We would write a code, it would pass test cases, and we would feel that we are ready to face campus placement. But sorry to break your confidence, that era is over. Companies are now looking at code quality. You would have observed that in the screening round, 100 students would clear the a screening round, and students would go to the technical interview, and after technical interview only 10 would get offered. This is the main reason because of which those 10 candidates got offered, which is code quality. Student A
was writing the code in 5 lines. Student B was taking 20 lines to write a code. So student A has written a better code as compared to student B. So this is where code quality plays an important role. When you would write a parameter, though the code was 100% accurate, you would observe the changeability was 0%, the extensibility was 0%, testability was 54%. So this becomes the further area of improvement. Now let me show you one more report. Akash, let's say Akash is my good friend and he has written a better code as compared to Aditi. In your report, which you would get to know all the 16 different code quality parameters. You would come to know what was the coding problem given to you. You would come to know what is the code written by you, and then there would be a line by line commentary. You would come to know on which parameter your code performed, did not perform, what went well, what went wrong, if the equality got hampered, why it got hampered, if accuracy got hampered, why it got hampered. Now, let me scroll down. We do not stop at telling the student that you pass or fail. The biggest USP of our platform is giving the developmental inputs to the candidate. You would see on other platform you would not find such developmental inputs. Our platform would guide the candidate that if you could incorporate these 6 changes in the code, your accuracy would have become better. If you can incorporate these 5 changes in your code, your quality would have been better. And if you can incorporate these 2 changes in your code, the technical debt would have become better. Now you must be thinking, what is this technical debt term? So technical debt is the amount of a time somebody would take to convert a bad code to a good code. So we measure the technical debt as well. If student could have fixed these 2 things in the given code, the technical debt would have reduced by 23 minutes. So this is how it would give you an edge over others in the campus placement if you can master code quality concepts, and if you can start writing universally appealing code which passes all 16 different code quality parameters. So this is dimension number 1 on which students readiness for IT role would be evaluated. This is how students of BITS Pilani, VIT Vellore, and SRM are practicing. Now let us go to the second dimension. The second dimension is core cognitive competency. I again going back to the survey report. In the survey report, 92% of the companies said cognitive skill is going to play a critical role at the time of campus placement for 2027 batch and 2028 batch. So here we measure the student's ability to learn, unlearn, relearn. It is not a traditional aptitude test, not at all. ChatGPT, if you read newspaper, ChatGPT got all India national rank 4 in JEE exam last year in the month of May. What does it mean? AI models has reached to a stage where it can solve the traditional uh, aptitude problem. For example, a train is moving at a speed of 10 kilometer per hour. How long it would take for a train to cross a platform of, let's say, 100 meter in length? Easily ChatGPT can solve. So then companies also thought, yeah, if we start measuring the students' cognitive competency by giving them the traditional aptitude test, we would never know द ट्रू लर्नेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स. सो कंपनी ने सोचा कि कुछ नए टेस्ट हमें डिजाइन करने चाहिए जिसके द्वारा हमें ये पता चले कि स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से एआई के साथ काम कर सकता है. जब आपको एआई के साथ काम करना है तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी है. फॉर एग्जांपल, आप कितने अच्छे से डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, आप अजम्पशंस के साथ कितने अच्छे से डील कर सकते हो, कंक्लूजन्स पे कैसे आ सकते हो. अगर आपको कोई लॉजिक दिया गया है, उस लॉजिक में कुछ गड़बड़ है, तो उस लॉजिक के अंदर जो गड़बड़ है उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो. तो ये सब स्किल्स हमने कंपनी ने बोला कि इन इन स्किल्स को स्टूडेंट्स को डेवलप करना चाहिए, एंड दीज आर द काइंड ऑफ स्किल्स जो हमारा कोर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इवेलुएट करेगा. क्विकली अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको आगे चल के कोर कॉग्निटिव एडेप्टेबिलिटी का असेसमेंट का सिलेबस भी दिखाऊंगा. सो दिस पर्टिकुलर असेसमेंट एसेंशियली मेजर्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. The third dimension, and it's the most critical dimension. India's sixth largest IT company is LTI Mindtree. उनके CEO हैं मिस्टर वेनु.
उन्होंने कहा कि मूविंग फॉरवर्ड फॉर 2027 बैच 2028 बैच एआई असिस्टेड कोडिंग इज द वे फॉरवर्ड। बेंटले, पीवीजी पुणे, पीवीजी कॉलेज आपको पता होगा पुणे में है। दे वेंट फॉर द कैंपस प्लेसमेंट फॉर 2026 बैच एंड दे अलाउड स्टूडेंट्स टू यूज चैट जीपीटी। एंड वो देखना चाहते थे कि कौन सा स्टूडेंट चैट जीपीटी को यूज करके सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट कोड लिख पा रहा है। So that time is very soon, it's very near, where you would observe that AI assisted coding would be playing a critical role. So we are the first company in India to develop an assessment framework for Gen AI proficiency. So when we say Gen AI proficiency, there are two sides of it. Side number one is how effectively you can prompt AI. Side number two, the second important aspect is how effectively you can work on AI generated code. So when it comes to part number one, the first side of the coin is how effectively you can prompt an AI tool. This particular skill is being evaluated through prompt efficacy. I talked about design thinking approach. Again, going back to the survey of the top 50 companies which we did in the market, we would measure how the student is able to apply the concepts of design thinking, how student is able to uh, apply it to a complex coding problem and craft a prompt and run the prompt, and basis the prompt which the candidate has written, what kind of code is being generated and how is that code performed. So this particular skill is called prompt efficacy skill we would assess. The second side of the coin is how effectively you can work on AI generated output. बिकॉज आपने प्रॉम्प्ट तो कर दिया, प्रॉम्प्ट के बाद जो कोड जनरेट हुआ आप उसको कितना फर्दर ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो सो दैट इट्स अ प्रोडक्शन रेडी कोड। सो दैट इज द सेकंड एबिलिटी। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ। So I talked about prompt efficacy. So here a coding problem would be given to the candidate and the candidate would be asked to write a prompt and हम आपका कीवर्ड छीन लेंगे। हम बोलेंगे कि आप खुद अब कोड मत लिखिए, आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉम्प्ट की सहायता से सॉल्व करनी है। A student would write the prompt and run the prompt, and basis that prompt the code would be generated. Student have to analyze the given code would give the desirable output or not and then submit the question. Once you submit, your detailed report would be generated. How was your prompt and on in terms of quality, in terms of effectiveness. मैं आपको एक sample report दिखाऊंगा। Second thing I talked about code improvement. So आपको एक coding problem दी जाएगी, आपको एक AI generated code दिया जाएगा, आपको इस कोड के अंदर एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको रेक्टिफाई करना है और इस कोड की परफॉर्मेंस को फर्दर एनहेंस करना है। इस तरीके से आपका चेक, आपकी जो स्किल चेक की जाएगी कि आप एआई जनरेटेड कोड पे कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू वन सैंपल रिपोर्ट फॉर प्रॉम्प्ट एफिकेसी। ये सारी रिपोर्ट्स आपको आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा शेयर कर दी जाएंगी, बट क्विकली आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओनली द प्रॉम्प्ट एफिकेसी रिपोर्ट सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट व्हेन यू सी इट। सो जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा था वो दो डिफरेंट पैरामीटर पे इवेलुएट हो रहा है कि आपकी प्रॉम्प्ट की क्वालिटी कैसी रही और आपकी प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस कैसी रही। तो आप देखेंगे जो प्रॉम्प्ट की क्वालिटी है वो फर्दर थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स पे इवेलुएट हुई कि आपने कितना क्लैरिटी से प्रॉम्प्ट लिखा, कितना कंसाइज प्रॉम्प्ट लिखा और कितना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखा। जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा उसकी इफेक्टिवनेस क्या रही, जो भी कोड जनरेट हुआ हम उस कोड की भी एक्यूरेसी, क्वालिटी और डेप्थ के पैरामीटर्स को इवेलुएट करेंगे। आपको आपको पता चलेगा कि आपकी नेशनल परसेंटाइल क्या है, आपकी प्रॉम्प्ट क्वालिटी पे आप किस लेवल पे फॉल करते हैं। आपको डेवलपमेंटल इनपुट्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे कि आप प्रॉम्प्ट लिखते समय और क्या बेटर कर सकते थे। आपकी प्रॉम्प्ट की क्लैरिटी अगर कम रह गई तो किन कारण से कम रह गई। तो इस प्रकार की आपको थरो डेवलपमेंटल रिपोर्ट हम आपको देंगे विद व्हेन इट कम्स टू प्रॉम्प्ट एफिकेसी। So with this, I have completed, it's already 30 minutes over. I would take another 10 minutes of your time and then very soon we would complete the presentation. So this particular part was very, very important, that how other students of BITS Pilani, SRM, Rai Soni Group, DJ Sangvi students are preparing themselves for the campus placement, where there is a huge skill gap, where hiring trends are changing because of AI. So this is how once you would subscribe with litcoder, you would undergo all these assessments. So now let me quickly summarize. I would now move fast.
So these are the topics from which the coding questions would be picked up. So these would be shared with you. You can refer to these slides later on. I have talked in the sample report. I have shown you what were the different code quality parameters uh, of a student's report. So these are the 16 code quality parameter on which the code is being evaluated. This is the syllabus and the structure of the core cognitive competency assessment. I talked about your ability to deal with assumptions, evaluate evidences. So these are the 15, these are the 14 critical topics which would get evaluated in cognitive competency assessment. We talked about prompt. I have shown you. We talked about code improvement because when you would join the company, 50% of your time would go in debugging, working on the code written by somebody else. And when we did an assessment in our partner colleges, the biggest area of improvement was this particular section. Students can very well write their own coding problem, but the moment they are given the code written by somebody else, they struggle. And this skill is a critical skill which you should develop if you want to make a bright career in the IT field. So there would be an assessment on code improvement in just like that. सो एक छोटी सी मीम है समय कम है तो मैं इस पे ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा नाउ लेट अस डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सो अब आप सोच रहे होंगे कि यार टेस्ट स्ट्रक्चर तो बड़ा बढ़िया है समझ में आ गया कि किन किन पैरामीटर्स पे हमें टेस्ट किया जाएगा again I am telling you the purpose of this assessment is to show you a mirror, to show you your start line, to show you ki what does it take to get into a product role, what does it take to get into a service role, what does it take to get into a IT consulting role against the industry standard, where do I stand. So सबसे पहले मेजर करना बहुत जरूरी है तभी आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे तो आपका आप इन सभी पैरामीटर्स के थ्रू एसेस होंगे अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा another 5 minutes and we would conclude. So when you would subscribe, when you would partner with litcoder, this is the program you would get. बिकॉज अब तक स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार मॉडल अच्छा है अब ये बताइए कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होगा कितने समय के लिए चलेगा कितनी ड्यूरेशन रहेगी कब कब कौन से असेसमेंट होंगे दैट आई वुड लाइक टू explain you. So please pay your highest attention to this particular couple of slides. You would understand once you subscribe for litcoder what exactly you are going to get. So let's start. कौन बनेगा करोड़पति सबने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में पड़ाव रहते हैं तो इसी तरीके से हमारे आइरिस प्रोग्राम में 5 पड़ाव हैं फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 फेज 5 टोटल 5 फेजेस तो आज स्टूडेंट प्रेजेंटेशन हो रही है हम इस स्टूडेंट प्रेजेंटेशन के बाद एक गूगल फॉर्म फ्लोट करेंगे वी वुड कीप दैट गूगल फॉर्म ओपन फॉर लेट्स से 3-4 days just to check how many of the students are interested to be the part of litcoder journey. गूगल फॉर्म के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया है उसके बाद वी वुड गिव यू अ पेमेंट गेटवे लिंक अ रजिस्ट्रेशन लिंक through which you would give your basic academic information and you would able to pay a given subscription fee. आप एक सब्सक्रिप्शन फी पे करेंगे उसकी भी एक डेडलाइन होगी उस डेडलाइन के बाद लेट्स से 100 बच्चों ने 200 बच्चों ने रजिस्टर किया जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया we would come to the campus and we would again explain this program more in detail. We would go layer by layer deeper. We would come down to the campus and we would like to meet students who want to be part of litcoder journey. So उस प्रेजेंटेशन में जब हम आपके कैंपस आएंगे तब हम आपको आइरिस प्रोग्राम और डिटेल में बताएंगे तो ये प्रोसेस रहेगा प्रोसेस नंबर 1 एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया जाएगा आप उस गूगल फॉर्म पे जाइए अपना कंसेंट फिल करिए कि आई एम रेडी टू पे अ गिवन फीस एंड सब्सक्राइब फॉर litcoder program. Then we would give you a payment link. You please make the payment. And after the payment, we would come to the college and we would speak to the registered students. We would give them their login credentials and through which the IRIS program would be implemented. IRIS program would be implemented through 5 stages. These are the 5 stages. Now let me begin stage by stage. Okay, stage number 1. प्री प्रोग्राम बेंचमार्किंग इवैल्यूएशन जो भी मैंने आपको पूरी व्हील दिखाई थी वो व्हील का असेसमेंट इस स्टेज पे होगा लेट्स से हम 26 जनवरी तक
सारी साइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, ऑन बोर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं, वी वुड कम टू द कैंपस एंड देन वी वुड रन अ प्री प्रोग्राम benchmarking evaluation. In this assessment, we would measure your current readiness, your fitment for IT role on those three dimensions. We want to check with training, without training, with preparation, without preparation, where do you stand against the industry standard. सेकंड, वो असेसमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वी वुड एनेबल द लर्निंग एक्सरसाइजेस. नाउ स्टूडेंट वुड चेक देयर इंडिविजुअल रिपोर्ट इन देयर लॉगिन. स्टूडेंट ये देखना चाहेगा कि यार मैं कहाँ कमजोर रह गया, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है. देन वी वुड रन अ सीरीज ऑफ 4 डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेस. ये एक तरीके की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी विच इज कॉल्ड एज लर्निंग एक्सरसाइजेस. देन वी वुड डू अ मिड प्रोग्राम इवेल्युएशन. लेट्स से फरवरी के अंदर वी वुड डू अ मिड प्रोग्राम इवेल्युएशन की स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा अपनी लर्निंग एक्सरसाइज में, स्टूडेंट्स ने जो प्रैक्टिस किया ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सरसाइज, वो कितना इंडस्ट्री अलाइंड है. So we would do a mid-program progressive evaluation. Then we would expose you to the advanced concepts of coding ability, coding skills. So here आपको some more 4 additional series of learning exercises आपको यहाँ दी जाएंगी. उसके बाद हम पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे विद पोस्ट प्रोग्राम बेंचमार्किंग इवेल्युएशन. तो आप खुद की प्रोग्रेस देख पाओगे फ्रॉम फेज 1 टू फेज 5. लेट्स से जब आप फेज 1 में थे, आप सिर्फ 30% ला पा रहे थे इन कॉग्निटिव. जब आप फेज 5 तक पहुंचे तो मे बी आप 30 से आप ला पा रहे हैं 50%. सो आप देख पाओगे कि आपकी पूरी जर्नी में क्या डेल्टा इंप्रूवमेंट रही. अब थोड़ा इस पे डबल क्लिक करके और डिटेल में समझते हैं. तो वी वुड कम टू द कैंपस and we would address the candidate, which is a pre-program benchmarking evaluation. ये ग्रेडिंग क्या है? इस ग्रेडिंग के द्वारा आप खुद से जान पाओगे कि यार मैं क्या आईटी रोल के लिए फिट हूँ, क्या मैं सर्विस रोल के लिए फिट हूँ, मैं किस कंपनसेशन के लिए फिट हूँ. उसके बाद हम रन करेंगे डेवलपमेंटल मॉड्यूल्स, फिर मिड प्रोग्राम, फिर डेवलपमेंटल मॉड्यूल्स, फिर पोस्ट प्रोग्राम एंड फिर फाइनल हम एक फाइनल एनालिसिस आपकी मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे एंड दिस इज हाउ द एंटायर डिलीवरी वुड कंक्लूड. आप यहाँ पर 2 कोर्सेज देख रहे होंगे. प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने कहा कि कोड क्वालिटी इज गोइंग टू प्ले अ क्रिटिकल रोल. काफी स्टूडेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि भैया ये हम कोड क्वालिटी कहाँ जाके सीखें. There are no structured course available on internet to master code quality concepts. So we have designed a course which is called Introduction to Clean Code. It would take 7 days of your time, and in 7 days there would be 19 different modules which you can complete, and you would be able to master the clean code concepts. अगर आपने ये 7 दिन में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, 8वें दिन से आप देखेंगे कि आपकी कोड की क्वालिटी बहुत ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. हमने एक और कोर्स डेवलप किया क्योंकि मैंने जेनेआई प्रोफिशिएंसी की काफी बात की कि दैट इज द फ्यूचर अहेड. मैंने कहा कि डिजाइन थिंकिंग अप्रोच अप्लाई करके क्या आप अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो. तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये जाके हम कहाँ पढ़ें. अब तक तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि टेस्ट केसेस कैसे पास किए जाते हैं. तो हमने एक और कोर्स डिजाइन किया विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग. सो स्टूडेंट कैन go to this course. It would take 3 days of your time. It would have 5 modules and students can complete these 5 module, and end of this module they would learn prompt engineering for coding and testing. तो पूरा प्रोग्राम इस तरीके से दिखेगा. अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा. मैं एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल के द्वारा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूं एंड देन वी कंक्लूड दी प्रेजेंटेशन. वी हैव अ गेस्ट स्पीकर, आपके कपिल वुड कम एंड कंक्लूड द प्रेजेंटेशन. तो कपिल की बात आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा. सो आई एम एक्सप्लेनिंग योर डिलीवरेबल्स, अवर डिलीवरेबल्स विद द हेल्प ऑफ अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स प्रोग्राम. सो जैसे मैंने कहा कि वी वुड स्टार्ट विद प्री प्रोग्राम बेंचमार्किंग इवेल्युएशन. रैंडमली फ्रॉम 19 डिफरेंट टॉपिक्स सवाल पिकअप किए जाएंगे. सबसे पहले आपका टेस्ट होगा कोडिंग प्रोफिशिएंसी का. आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगर आपको कोड लिखने को बोला गया तो आप कैसे कोड लिखते हैं, कोड क्वालिटी पैरामीटर पे आपका कोड कैसा परफॉर्म करता है. यहाँ पे आप 3 देख रहे होंगे ब्रैकेट में. 3 का मतलब है 3 कोडिंग प्रॉब्लम आएंगे आपको, एक बिगिनर, एक इंटरमीडिएट, एक एडवांस. दिस वुड रफली टेक 90 मिनट्स ऑफ योर टाइम. जैसे ही आप ये कंप्लीट कर दोगे, द नेक्स्ट असेसमेंट वुड बी प्रॉम्प्ट एफिकेसी असेसमेंट
and the next assessment would be code evaluation and improvement assessment, and we would conclude with cognitive assessment. सो टोटल कुल मिला के आप टोटल 4 टेस्ट दे रहे हैं: कोडिंग प्रोफिशिएंसी का टेस्ट, प्रॉम्प्ट एफिकेसी का टेस्ट, कोड इम्प्रूवमेंट का टेस्ट, एंड कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट. दिस टेस्ट वुड रफली टेक योर 3 hours ऑफ योर टाइम. सो दिस इज प्री प्रोग्राम बेंचमार्किंग इवेल्युएशन. फिर हम लॉन्च करेंगे डेवलपमेंटल एक्सरसाइज. आपने देख एक यहाँ पर देखिए डेवलपमेंटल एक्सरसाइज 1. यहाँ पर हमने कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स को क्लब कर लिया: अरेज, स्ट्रिंग्स, मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल. इन टॉपिक पे हम आपको 2 असेसमेंट देंगे. अब ये 2 असेसमेंट कौन से हैं? असेसमेंट नंबर 1 होगा कोडिंग प्रोफिशिएंसी का, जहां पर आपको खुद से कोड लिखना है. असेसमेंट नंबर 2 होगा कोड इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट का, जहां पे आपको एआई जनरेटेड कोड दिया जाएगा, आपको उस कोड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. सॉर्टिंग, सर्चिंग, 2 पॉइंटर में अगेन 2 सवाल दिए जाएंगे. आप देखेंगे यहाँ पे कोडिंग प्रोफिशिएंसी के 2 सवाल दिए जाएंगे. यहाँ पे आपको कोड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लिखना है. इसी तरीके से हैशिंग, स्लाइडिंग विंडो में आपको 2 प्रॉब्लम दिए जाएंगे. यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जहाँ पे कोड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लिखना है. कोड इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट में क्या होता है? आपको एआई जनरेटेड कोड दिया जाएगा, उसको आपको फर्दर एनहांस करना है. तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम रन होगा. इसी प्रकार से मिड प्रोग्राम, इसी प्रकार से आपकी फर्दर डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेस मिलेंगी, और पूरा प्रोग्राम फाइनली हम कंक्लूड करेंगे पोस्ट प्रोग्राम करके. हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के महीने में प्री प्रोग्राम कर दें, फरवरी के महीने में डेवलपमेंटल एक्सरसाइज कर दें, जनवरी के महीने में 3 घंटे का असेसमेंट, फरवरी के महीने में 8 घंटे का असेसमेंट, मार्च के महीने में कुछ 10 घंटे का असेसमेंट, और अप्रैल आते आते वी कैन कंप्लीट योर पोस्ट प्रोग्राम assessment. This is for second year students. इसी तरीके से we have a different program with different level of difficulty, but on the for example जो arrays and strings के concepts हैं वो थोड़े advance होंगे as compared to the second year students. तो इस तरीके से दिखेगा थर्ड ईयर का प्रोग्राम, और इसी तरीके से दिखेगा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का प्रोग्राम. So now I am concluding, and then I would request Kapil to take over and conclude this presentation. So I'm summarizing. आपने मेरी पूरी बातें सुनी, और अब आपके मन में सवाल उठे होंगे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका, जिसके द्वारा आप खुद की इंडस्ट्री रेडीनेस को मेजर कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लिट कोडर उनसे अलग कैसे है? देखिए, लिट कोडर इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये एक ट्रेडिशनल कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है. ये एक ट्रेडिशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म भी नहीं है. ट्रेडिशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म पास और फेल करके रुक जाते हैं. ट्रेडिशनल कोडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं हुए वो बताकर रुक जाते हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 चीजें होती हैं. नंबर 1, हम आपको उन पर्टिकुलर स्किल्स पे इवेलुएट कर रहे हैं विच इज क्रिटिकल इन द एज ऑफ एआई. सबसे पहले हम करते हैं मेजर. स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई आज की तारीख में आप कहाँ स्टैंड करते हो. फिर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि व्हाट डज इट टेक टू गेट इनटू अ प्रोडक्ट रोल, सर्विस रोल, 10 लाख का जॉब, आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर स्ट्रांग हो. फिर हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं हमारे आइरिस प्रोग्राम के द्वारा उन गैप्स को डेवलप करने के लिए. 8 डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेज मिलती हैं, 2 लर्निंग कोर्सेज मिलते हैं. स्टूडेंट उन कोर्सेज के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर देता है, और जो गैप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको डेवलप करता है. तो जितने भी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है मार्केट में, अगेन मैं खुद को रिपीट कर रहा हूँ, दे ओनली मेजर कोड एक्यूरेसी. यहाँ पर 16 डिफरेंट इंटरनेशनली अक्लेम्ड कोड क्वालिटी पैरामीटर पे स्टूडेंट्स का डेट में वो ट्रेडिशनल तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, जो कि चैट जीपीटी भी सॉल्व कर सकती है. हमारा कॉग्निटिव टेस्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट. इट मेजर्स द कॉग्निटिव स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड, क्रिटिकल इन द एज ऑफ एआई. थर्ड सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस इज जेनेआई प्रोफिशिएंसी. फर्स्ट टाइम in your, let's say, 2 years of engineering or 3 years of engineering or 4 years of your engineering, you would be measuring your GenAI readiness for IT role. आप कितने अच्छे से AI tools के साथ काम कर सकते हैं. That is the critical skill which companies are looking at, and our platform would measure it. Thank you so much for listening to me. I would now request Kapil
to please conclude the presentation. And if you can also summarize this process once again, it would be help, like how the student should register. Over to you, Kapil. थँक्यू विनय. मित्रांनो झोपले का? विनयने एवढं सारं तुम्हाला सांगितलं. मला वाटते काही लोक तर झोपूनच गेले असतील की काय सांगतायत विनय, काय नाही. हा, तर मित्रांनो, संक्रांतीचा सण आहे. तिळगुळ घ्या, गोड आपण ऑनलाईन मध्ये हा सेशन कपिल, ऐकत आहोत. यस, मेरा आवाज आ रहा है? थोड़ा बीच में चला गया था कपिल, आप संक्रांति ग्रीटिंग से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. मुझे मराठी नहीं आती, बट मैं मराठी समझ पा रहा हूँ. परफेक्ट परफेक्ट. तो विनय, मराठी में हम बोलते हैं तिड़गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला. इट इज अ ग्रीटिंग फॉर जी. संक्रांति. जी. ओके. अभी हम वर्चुअली तो बांट नहीं सकते, बट बोल तो सकते हैं एटलीस्ट. जी. तो मैं यही बोल रहा था कि आज हमने ये ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है. काफी रिलैक्सिंग मूड में भी काफी लोग सुन रहे होंगे. काफी लोग मे बी दे हैव पुट देयर मोबाइल फोन असाइड. उन्होंने मल्टीटास्किंग करते हुए भी कर रहे होंगे. कोई बस अटेंडेंस के लिए भी बस आए होंगे. बट मैं एक इम्पेसाइज एक चीज पे करना चाहूंगा की आता आपण जो एक गोष्ट केलं, इट इज अबाउट युअर एम्प्लॉयबिलिटी. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एम्प्लॉयबिलिटी हा एक रिलॅक्सिंग विषय नाही. इट इज अ बर्निंग प्रॉब्लेम. आणि जॉब मार्केट खूप क्रिटिकल झालेलं आहे. तर जॉब मार्केटमध्ये जेव्हा तुम्ही ड्राईव्हला किंवा इंटरव्ह्यूला बसता, त्या दिवशी एक गोष्ट खूप तपासली जाते. दॅट इज की तुम्ही त्या दिवशी इंडस्ट्रीसाठी रेडी आहात की नाही. पण जर तुमच्याकडे त्या दिवशी त्याचा आन्सर नसेल, तर हे खूप मोठी एक चूक आहे. आणि विद्यार्थ्यांची चूक इथंच होते. त्यांना वाटतं की ठीक आहे ना, प्लेसमेंटसाठी टाइम आहे, आपण नंतर बघू, आता नाही, नंतर बघू, खूप टाइम आहे. पण काय होतं की जो नंतरची गोष्ट आपण करतोय ना, ते पहिल्या रिजेक्शनच्या स्वरूपात येते. की नंतर नंतर करत तो पहिला रिजेक्शन आपल्या समोर येऊन जातो. तर लिटवर्क इथे तुम्हाला घाबरवण्यासाठी नाही आलंय. इट इज अबाउट की तुम्हाला तो उशीर होऊ नये. तुम्ही तुमची एम्प्लॉयबिलिटी लवकरात लवकर डेव्हलप करावी. तर त्यासाठी तुम्हाला ते अवेअर करण्यासाठी म्हणून आम्ही इथं आहोत. आणि त्याच्यात एक गोष्ट आहे की आज आपण डिस्कशन केलं, मे बी थोड्या वेळासाठी आपण डिस्कस करेल, हा कॉल संपेल. पण तुमची तयारी आज कुठं आहे आणि काय काय मला एक्झॅक्टली तयारी करायला पाहिजे जेणेकरून मी प्लेसमेंटसाठी रेडी राहील, हा प्रश्न असा सहजासहजी सुटण्यासारखा नाहीये की आज आपण ऐकलं, मला माहित आहे की काय काय करायला पाहिजे, उद्या सुटला नाही. तर आज तुम्ही त्या प्रश्नाकडे बघा, स्वतःची तयारी तपासा थ्रू लिटवर्क. आणि तेव्हाच तुम्ही हळूहळू त्या प्रोग्रेस करू शकाल. आणि जो आपला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की एम आय रेडी, एम आय एम्प्लॉयबल फॉर नॉट, याचा तुम्हाला आन्सर भेटेल. नाहीतर काय होईल की उद्या तुम्हाला मग रिजेक्शनकडे बघावं लागेल आणि त्याने तुमचा जो वेळ, मूल्यवान वेळ जो तुमच्या हातात आहे तो त्यावेळेस गेलेला असेल. तर मला हे थोडंसं एम्फेसाइज करायचं होतं. नाउ कमिंग बॅक टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट. विनय, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? अच्छा, स्क्रीन नहीं विजिबल थी. अच्छा, नहीं विजिबल है. कपिल, मैं एक और बार शेयर कर रहा हूँ. हाँ प्लीज. मैंने वो क्यूआर कोड लगा रखा है. अच्छा, जब मैं प्रेजेंट कर रहा था तब विजिबल थी स्क्रीन. हाँ हाँ विजिबल, अभी विजिबल है विनय. परफेक्ट. जी तो कपिल. मित्रांनो, तुमचे काही क्वेश्चन असतील, हा खूप चांगली संधी आहे तुमच्याकडे की जे पण मनात काही पण प्रश्न असोत, रिलेटेड टू लिटवर्क असोत किंवा करिअर बद्दल पण असोत, तुम्ही इथं विचारू शकता. आम्ही त्यांना एक चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला आन्सर करू शकतो. मे बी वी विल गाईड यू थ्रू इट. आणि राहिला प्रश्न की लिटवर्कच्या प्रोग्रामला तुम्ही कसं रजिस्टर करू शकता, तर हा क्यूआर कोड आहे. या क्यूआर कोड तुम्ही स्कॅन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये गुगल फॉर्म येईल. गुगल फॉर्म मध्ये तुम्हाला आपलं कन्सेंट द्यायचं आहे. कन्सेंट दिल्यानंतर त्याचा डेटा आम्ही घेऊ आणि नंतर ज्या फॉर एक्झाम्पल लेटस से 150 मुलांनी कन्सेंट दिला, मग त्या 150 मुलांना आम्ही पेमेंट लिंक पाठवू की या पेमेंट लिंक थ्रू तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा आणि पेमेंट करा. आम्ही ती पेमेंट लिंक मे बी 4 days वी कॅन पुट कीप इट ओपन. ते आम्ही सरांशी डिस्कस करूच त्याबद्दल. आणि ते सगळं पेमेंट प्रोसेसिंग, सगळं रजिस्ट्रेशन झालं की इमिजिएटली आपण स्टुडंट प्रेझेंटेशन आणि असेसमेंट स्टार्ट करू.
कारण की हा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हा खूपच क्रिटिकल मंथ आहे, आणि मी तर 26 बॅचसाठी म्हणेल इट इज अ व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल. कारण की जसं तुमचा हा सेमिस्टर संपणार तुम्हाला इमिजिएटली प्लेसमेंट सुरू होणार. काही मुलांचं तर ऑलरेडी झालं पण असेल. सिमिलरली फॉर सेकंड इयर तुमच्याकडे 1 वर्ष आणि 3 महिने म्हणजे 1.5 वर्ष पकडा, हा खूपच मोलाचा वेळ तुमच्याकडे आहे. आणि हा वेळ तुम्ही कसा वापरता, प्रिपेरेशन कसं करता, त्याच्यासाठी खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि जसं की विनयने सांगितलंच होतं की कुठल्याही गोष्टीचं प्रिपेरेशन जर तुम्हाला करायचं आहे तर आधी तुम्हाला माहित पाहिजे की एक्झॅक्टली काय प्रिपेअर करायचं. नाहीतर मग आपण सैरावैरा इकडे तिकडे पडत असतो आणि काही पण प्रिपेअर करतो आणि त्याचं फळ आपल्याला भेटत नाही. तर स्ट्रॅटेजिकली आपली प्रिपेरेशन प्लॅनिंग करायची आहे. तर ही स्ट्रॅटेजी बनवण्यासाठी आम्ही नेटवर्क तुम्हाला मदत करेल. नाव वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन्स. Yes. विनय, क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट? राइट. सो द क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट, कपिल आप सुन पा रहे हैं? आप क्वेश्चंस रिपीट कर दीजिएगा. आई वुड कीप these presentation slide on so that students can who have joined late they can understand. See, a good prompt is a prompt. मैं पहले बताता हूँ, एक थोड़ा लंबा आंसर देता हूँ कि जब भी आप कंपनी में जाओगे और जब आप लेट्स से कंपनी के बनाए हुए एआई टूल्स पे काम करोगे या चैट जीपीटी पे काम करोगे और जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, तो क्या होता है कि हर प्रॉम्प्ट एक टोकन में डिवाइड होता है. उन टोकन्स का चार्ज होता है कंपनी पे. तो अच्छा प्रॉम्प्ट वो होता है जो कि कंसाइज हो. जो चीज आप एआई से पूछना चाहते हो कम से कम शब्दों में पूछ पाओ ताकि आपके नंबर ऑफ टोकन्स कम हो जाए और आप कंपनी का खर्चा कम रखो. प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने रामायण लिख दी पूरी और फिर पूछा कि राम की पत्नी का नाम क्या था. जवाब तो सीता है, बट उसके लिए आपने पूरी रामायण लिख दी. तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट वो होता है जिसके नंबर ऑफ टोकन्स कम हो टू प्रोसेस टू गेट अ डिजायरेबल आउटपुट. नंबर ऑफ टोकन्स कम कब होंगे? जब आपका प्रॉम्प्ट कंसाइज है, प्रिसाइज है और एआई टूल को एक प्रॉपर क्लैरिटी देता है कि उसको काम करना क्या है. तो प्रॉम्प्ट्स के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, स्टार स्ट्रक्चर, साल स्ट्रक्चर. प्रॉम्प्ट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इंडस्ट्री के कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है. जैसे कि किसी को फीडबैक कैसे देते हैं, OIPS मॉडल है कि आप ऑब्जर्व करो, उन्होंने जो गलती की थी उसका इम्पैक्ट बताओ, पॉज लो, फॉर उसका सॉल्यूशन दो. इसी तरीके से एक अच्छे प्रॉम्प्ट को लिखने के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए गए हैं. आप उन स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर सकते हो सो दैट आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेटर हो जाएगी. सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्ट्रेट, what are the qualities of a good prompt? A good prompt would be good on clarity, conciseness and specific. कितना specific है वो prompt. आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. और जो हमने कोर्स डिजाइन किया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग, उसमें हम स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं कि कोडिंग रोल के लिए कैसे प्रॉम्प्टिंग करो, टेस्टिंग रोल के लिए कैसे प्रॉम्प्टिंग करो. जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कि कोडिंग में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो आराम से टेस्टिंग का रोल कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का रोल कर सकते हैं इफ दे कैन मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. जी नेक्स्ट कपिल. क्वेश्चन आया है विनय, व्हाट इज टोकन? राइट. सो टोकन इज लाइक आपकी जितनी भी आपने जैसे 10th 12th में पढ़ा था ना सिग्निफिकेंट नंबर. अगर मैं लिखता हूँ 0001, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 1 है. उसके पहले के जो मैंने 3 जीरो लगाए हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है. तो जब आप एआई को कुछ काम करने को बोल रहे हो तो एआई के एलएलएम्स ओनली टोकन को पिकअप करते हैं जिनकी मदद से वो एक डायरेक्शन में सोच पाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, लेट्स ईट ग्रैंड मदर. तो मैंने अगर यहाँ पर लेट्स ईट के बाद कॉमा नहीं लगाया होता और मैंने लिखा होता लेट्स ईट ग्रैंड मदर, तो प्रॉम्प्ट समझता कि चलो अपनी दादी माँ को खा लेते हैं, कैनिबलाइजेशन हो गया ये. तो लेट्स ईट कॉमा ग्रैंड मदर, चलिए दादी माँ साथ में खाते हैं. तो यहाँ पर जो टोकन निकला ग्रैंड मदर निकला और ईट निकला और टुगेदर निकला. लेट्स, तो ये एक अननेसेसरी आपने वहां पर वर्ड लिखा. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप प्रॉम्प्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाई चैट जीपीटी प्लीज हेल्प मी राइट अ कोड इन पाइथन टू सॉल्व फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आपने टोकन्स बढ़ा दिए.
बट उसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो कम थी। तो टोकन इज essentially the significant part of the prompt which you have written basis which AI algorithm would work। तो उन टोकन्स को आप मिनिमम रखिए, मिनिमम शब्दों में, मिनिमम टोकन में डिजायरेबल आउटपुट आपको जनरेट करना चाहिए। काफी यूट्यूब पे कोर्सेज हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, आप उनको रेफर कर सकते हैं। देयर यू वुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है विनय। जी। हाउ टेस्टिंग हाउ टेस्टिंग इंजीनियरिंग इज डिफरेंट देन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज इट्स ऑल अबाउट प्रोग्राम क्वालिटी। मुझे लगता है ये इसके अराउंड है, अपना जो कोड इम्प्रूवमेंट के अराउंड क्वेश्चन होगा ये। राइट। सो देखिए, किसी भी कंपनी में मल्टीपल रोल्स होते हैं। जैसे कि एक फुटबॉल का एग्जांपल देके समझाता हूँ। फुटबॉल में क्या होता है, एक गोलकीपर होता है, एक स्ट्राइकर होता है, एक डिफेंडर होता है, एक राइट साइड का स्ट्राइकर होता है, एक लेफ्ट साइड राइट राइट का स्ट्राइकर होता है। इसी तरीके से जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल की हम बात करते हैं तो वहां पर मल्टीपल रोल्स होते हैं। एक रोल होता है आर्किटेक्ट का, जो कि गवर्न करता है कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स को नेम करोगे, किस तरीके से आपका पूरे कोड का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से कमेंटिंग होनी चाहिए। एक होता है आर्किटेक्ट, वो जो एल्गोरिदम्स किस तरीके से डिजाइन होंगे उसकी डिजाइनिंग करता है। और जो जितने भी दूसरे लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको गाइड करता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग डिप्लॉय होते हैं। लेट्स से कपिल बना रहा होगा ई कार्ट का कोड, निखिल काम कर रहा होगा पेमेंट गेटवे के कोड पर, मैं काम कर रहा हूँगा कस्टमर की जो आइटनरी है उस पर। तो मल्टीपल लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। आर्किटेक्ट का काम होता है इन सबको साथ में काम करवाना। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि पीछे से बैठ के रियल कोड लिखता है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल रोल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। जो भी कोड लिखा गया अगर उसको रियल टाइम में डिप्लॉय करेंगे तो क्या क्या एरर आ सकते हैं, कि क्या वो सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो कोड लिखा गया है उसको डिप्लॉय करने से पहले उसको थरोली टेस्ट करो, उसकी लोड कैपेसिटी टेस्ट करो, उसका पेनिट्रेशन टेस्ट करो, कि कोई हैकर अगर उसको हैक करना चाहेगा तो क्या आसानी से हैक हो जाएगा। तो ये होता है टेस्टिंग का रोल। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ रोल। जैसे कपिल ने कहा कि स्टूडेंट में भी कंफ्यूज है और वो पूछना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और कोड इम्प्रूवमेंट में अंतर क्या है। Code improvement is a skill which a software developer should have and a software tester should have। दोनों पे ये स्किल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता है उसी को कोड इम्प्रूवमेंट की स्किल आनी चाहिए। कोड इम्प्रूवमेंट की स्किल वो स्किल है जब आप कोड को एक ग्लैंस पे देख सकते हो और उसमें जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको रियल टाइम में कोड रन करने की जरूरत नहीं है। कोड को पढ़कर बता दोगे कि ये डिजायरेबल आउटपुट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी ये स्किल आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप खुद से 1,000 लाइन ऑफ कोड लिख दोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई एरर कहाँ आ रहा है। तो उस एरर को पिकअप कर पाना इज कोड इम्प्रूवमेंट स्किल। उस एरर को पिकअप करके कोड की परफॉर्मेंस को फर्दर एनहेंस कर पाना इज अ कोड इम्प्रूवमेंट स्किल। जब एज अ फ्रेशर आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको स्टार्टिंग डे वन से ये नहीं बोला जाएगा आप अपना कोड खुद से लिखो। आपको बोला जाएगा कि ये रही आपकी 1,000 लाइन ऑफ कोड, इनको जाकर आप ऑप्टिमाइज करो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी ये क्रिटिकल बन जाता है। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो कौन से आपका कोड क्या एरर थ्रो कर रहा है और वो एरर किस लाइन ऑफ कोड से जनरेट हो सकता है, तो ये सब स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए। दैट इज कोड इम्प्रूवमेंट स्किल। सो आई एम समराइजिंग, code improvement skill is equally important for somebody who is doing software testing or somebody who is doing a core software development का role। आई होप वी वर एबल टू आंसर। अदरवाइज आप हमारा नंबर ले सकते हैं योगेश सर से, एंड वी कैन कनेक्ट ऑन अ कॉल एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आया है, कपिल। व्हाट आर कोड क्वालिटी पैरामीटर्स। राइट। सो देर आर 16 Vinay, Vinay, sorry, I'm interrupting you. internationally acclaimed code quality measure। जी। हाँ जी। Vinay, better if you can हाँ answer this निखिल। question by presenting our report.
because the question is what are the code quality parameters. अगर आप हाँ, मैं report वही करके रिपोर्ट पे जा रहा open करेंगे हूँ। तो अभी it तक would मेरी be, स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? it was विजिबल है visible विनय। Vinay, but हेलो, you have not shown कपिल the आप report. कंफर्म? इट इज विजिबल। राइट, जी। So coming to the question by our friend, what are the 16 code quality parameters? So these are up, let's say changeability. Okay, so every coding, every programming language is governed by linting rules, LINTING, linting rules. तो हमने एज अ कंपनी सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिंटिंग रूल्स को स्टडी किया और हमने 16 डिफरेंट इंटरनेशनली अक्लेम्ड कोड क्वालिटी पैरामीटर्स को पिकअप किया। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पाएंगे कि 20 लिंटिंग रूल्स हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 10 हैं। तो हमने क्या किया, जितने भी इंटरनेशनली अक्लेम्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कोड क्वालिटी पैरामीटर्स थे को पिकअप किया। लेट्स से कैंडिडेट ने कोड लिखा और उनकी कोड की चेंजेबिलिटी थी 0%। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, आपने प्रोजेक्ट बनाया एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, जहां पे आपने स्टेट का नाम लिखा महाराष्ट्र। आपका प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल हुआ, अब आपको इस प्रोजेक्ट को स्केल करना है। तो आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब में भी एक्सटेंड करते हैं, इसको स्केल करते हैं। तो देन जिस तरीके से आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे उनको चेंज करना डिफिकल्ट हो गया, तो आपके कोड की चेंजेबिलिटी कम कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो हम आपके साथ डेक शेयर करेंगे ना, इसमें हर एक कोड क्वालिटी पैरामीटर की आपको डेफिनेशंस भी देंगे। तो जस्ट एज अ स्टूडेंट ने पूछा है, तो लेट मी शो यू क्विकली द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट कोड क्वालिटी पैरामीटर। तो हमने हमारे एल्गोरिदम को इस प्रकार से ट्रेन किया है कि वेन एवर अ स्टूडेंट वुड राइट अ कोड, इट वुड पिक अप द हिंट्स ऑफ कोड क्वालिटी। तो व्हाट आर दीज कोड क्वालिटी पैरामीटर्स हियर? जी, एक मिनट। हाँ, राइट। देखिए, देर आर डिफरेंट डिफरेंट कोड क्वालिटी पैरामीटर। वन ऑफ द पैरामीटर इज कोड मैच्योरिटी, कि कोड इज वेल डिजाइन एंड रिटन। इसमें ये चेक किया जाता है। कोड की मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी पैरामीटर्स को जज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिक्योरिटी फ्रॉम द यूज ऑफ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये पैरामीटर यहाँ पे इवेलुएट हो रही हैं। इसी तरीके से कोड रीडेबिलिटी आता है कि आपने कितनी अच्छी कमेंटिंग की है। फॉर एग्जांपल, मॉड्यूलैरिटी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि एक एक लाइन में कोड लिख देते हैं, तो जिसको समझ पाना डिफिकल्ट है। एक अच्छा कोड वो होता है जिसमें कि सब टास्क हो, वन टास्क डेटा को प्रोसेस करके एक आउटपुट दे, वो आउटपुट नेक्स्ट फंक्शन के अंदर जाए। इस तरीके से मॉड्यूलर कोड लिखना चाहिए। अगर किसी एक मॉड्यूल में खराबी हुई तो वो पूरे कोड को हैम्पर नहीं करता, कोड को करेक्ट करना आसान हो जाता है। तो कोड मॉड्यूलैरिटी एक इम्पॉर्टेंट कोड क्वालिटी पैरामीटर्स है। तो इस तरीके से कोड रीडेबिलिटी चेक की जाती है। इसी प्रकार से कोड मैनेजेबिलिटी चेक की जाती है, जैसे स्केलेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन, एबिलिटी टू कोड, एबिलिटी ऑफ अ कोड टू हैंडल हायर लोड। सो जो आपने कोड लिखा है, क्या वो हायर लोड को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो दीज आर कोड मैनेजेबिलिटी पैरामीटर्स। इसी तरीके से कोड फ्लेक्सिबिलिटी के हमने 4 पैरामीटर्स रखे हैं। तो व्हाट वी वुड डू in the presentation deck which we would share with Yogesh sir, we would include the definitions of these 16 code quality parameters. जी कपिल, next question. If we go for the Hello. test program from you, will I get some placement opportunities from your side apart from my college? जी, देखिए, दिस मॉडल is not working anymore because when it comes to campus placement, each company have their specific requirement which is different from other company. Hence, they run their own specific exam, अपना स्पेसिफिक एग्जाम करवाएगी। टीसीएस जब हायर करेगी तो खुद का टीसीएस का एग्जाम होगा, इन्फोसिस हायर करेगी तो इन्फोसिस का खुद का एग्जाम होगा, क्योंकि इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस वर्सेस एक्सेंचर वर्सेस विप्रो वर्सेस एचसीएल वर्सेस हेक्सावेयर वर्सेस
आप जितनी भी कंपनी ले लीजिए, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है, एंड दी एस and the competency which they look into each company's exam is different, so they cannot rely on one score basis which they can give an interview opportunity to the candidate. तो इसलिए लिट कोडर जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स ने अच्छा एग्जाम दिया, तो उस स्कोर के बेसिस पे क्या हमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज each company would look at the candidate through their own assessment mechanism. So litcoder would not help you to get access to interview opportunity. Litcoder platform helps candidate to prepare for multiple opportunities. It's a tool which would help you prepare, give structure to your preparation for various IT roles. As of नेक्स्ट now, G. This is how students of BITS Pilani, Rai Soni Group of Institution, DJ Sangvi College, they are leveraging our platform to prepare for critical aspects for campus placement and especially for IT roles. Ji Kapil. नेक्स्ट it's all about code or it also includes aptitude questions. So it's not about the only coding. It talks about three dimensions. Kapil, confirm करिएगा if screen is visible. Visible. Visible है कपिल? Visible है. विजिबल है ना? तो मैं स्टूडेंट्स को एक वो सर्वे विजिबल है, मैं थोड़ा फास्ट जैसी, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम 4 डिफरेंट क्रिटिकल स्किल्स मेजर कर रहे हैं, उसमें से कोडिंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल स्किल, कि आप खुद से कितना अच्छा क्वालिटी कोड लिख सकते हैं, विच इज ओनली 25% of what is being assessed on litcoder, unlike any other platform like LeetCode, HackerRank, HackerEarth, जहाँ पे 100% is only coding. But हमारे प्लेटफॉर्म पे there is cognitive, which is nothing but your aptitude, but not the traditional aptitude. तो यहाँ पे cognitive evaluation भी हो रहा है, यहाँ पे कोडिंग का भी टेस्ट हो रहा है, उसके साथ कोड इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, और उसके साथ प्रॉम्प्ट एफिकेसी का भी टेस्ट हो रहा है. तो जो मैंने आपको व्हील दिखाई, जो मैं अब डायरेक्ट जा रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट लिट कोडर जर्नी का पार्ट बनेगा, तो दे वुड बी असेस्ड ऑन दीज 9 पैरामीटर्स थ्रू थ्रीज 3 डायमेंशन, कोडिंग का टेस्ट, कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट, यहाँ पर भी एप्टीट्यूड आता है बट ट्रेडिशनल एप्टीट्यूड नहीं आता, अबाउट ओनली कोडिंग. It's about holistic evaluation of a student on 3 critical dimensions, which is required for upcoming campus placement season. Ji Kapil, next question. How, according to you, product-based company tests are different than service-based companies? Ji. So when it comes to service-based companies, they have high emphasis on cognitive ability. They have a high emphasis on cognitive ability. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ. That table we can show. एक टेबल के द्वारा मैं आपको ये एक्सप्लेन. यस, स्क्रीन दिख रही है कपिल? दिख रही है. आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कपिल इसको स्टूडेंट्स को? You can continue, Vinay. You would like to take this question, Kapil? Okay, I can. Sure. So देखिए, how, so a student is asking how is the role or the skill requirement different from service role to product role. So this is the different stacks of roles in which majority of IT placement happens. It could be IT service company, consulting company, GCCs and product companies. आप देखेंगे जब भी IT सर्विस कंपनी हायरिंग के लिए आती है, एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट दे चेक जेनरिक, वेरी वेरी जेनरिक चीजें वो चेक करती हैं. जेनरिक मतलब लो लेवल ऑफ कोडिंग एबिलिटी, हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी वहां पर चेक की जाती है. इतना डिटेल में वो पूछते नहीं है स्टूडेंट से. बट जब आप प्रोडक्ट रोल के लिए जाओगे, वहां पर हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एंड हाई लेवल ऑफ टेक्निकल चाहिए. यहाँ पर आप प्रोडक्ट रोल के अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर करना है, तो हाई डिग्री ऑफ कोडिंग स्किल होनी चाहिए, बोथ कोड इंप्रूवमेंट साइड एंड कोडिंग प्रोफिशिएंसी साइड. हाई डिग्री ऑफ कॉग्निटिव भी होना चाहिए. बट आईटी सर्विस में एवरेज कोडिंग स्किल coupled clubbed with high cognitive skill is enough.
तो आईटी सर्विस कंपनीज कैसी हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, 3 से 6 लाख रुपए की सैलरी वाली जो कंपनीज होती हैं वो आईटी सर्विस कंपनी होती हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट कंपनीज की बात करोगे, अच्छी बात यह है उनकी पे पैकेजेस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख होते हैं। तो यहाँ पर आपको हाई डिग्री ऑफ कोडिंग स्किल आनी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे कि स्किल की डेप्थ क्या एक्सपेक्ट करती है, तो आईटी सर्विस रोल के लिए एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट असेसमेंट मेजर्स वेरी वेरी जेनरिक स्किल्स, और यहाँ पे जो डेप्थ है स्किल की इट्स लो टू मीडियम। बट जैसे ही आप प्रोडक्ट रोल में चले जाओगे, वहां पे जो डेप्थ है स्किल की वेरी हाई है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आईटी सर्विस एंड प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट कंपनीज रोल एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी कपिल, नेक्स्ट सवाल। Are are these tests online? Means I can take from anywhere. See, we would take this call depending upon the final registration, because let's say 200, 300 students have registered. So we would always encourage the student come to the college under the testing environment, student appear for these assessment, because the purpose of this assessment is not to tell you passed or you failed. The purpose of this assessment is to tell you that what are your areas of development, areas of strength. Agar we would discuss with this college, if college supports, then we would encourage that you take this exam from the college. Otherwise, platform is designed in a manner that student can take the exam from home also. Students of BITS Pilani, Vellore Institute of Technology, they take their assessment from home. But here one important thing I want to highlight, every test would have a start date and the end date. It would not be open for your lifetime. Let's say for example, maximum 4 days of testing would be there. But the test would have a start date and the end date. It would not be open for your lifetime. Sir, your mic is muted. You are in the show. Sorry, मेरा माइक कब म्यूट हो गया था कपिल? कहाँ तक सुन You पाए are थे आप? explaining. Just You were अभी just अभी हुआ था. ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था कि, और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है कपिल? दिख रही है. ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को ये समझा रहा था कि दिस एग्जाम कैन बी टेकन फ्रॉम होम ऑल्सो, दिस एग्जाम कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम कॉलेज ऑल्सो. So depending upon the registrations, overall registrations which we are getting, we would take this call. But when the student is taking this exam, they should take it with the seriousness, and each exam would be open for a particular window. And within that window, the student should complete the exam. ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपने पे किया और आप उस 4 दिन की विंडो में एग्जाम नहीं लिख पाए, तो वो एग्जाम आपका एक्सपायर हो जाएगा. So that is the only important point I want to highlight. कैसे होगा, we would let you know depending upon the final registration. But the way we would plan is students participation would be the utmost top priority for us. अगर हमें लगता है कि students का participation would be highest if the assessment happens from the college versus if the assessment happens in the home, accordingly we would take a call. Next question, Kapil. That's all for the relevant questions, sir. Also, we have some time constraint. We just have 1.5 minutes more. So, I would like to thank Sure, sir. the team lead code Let to me guide stop our sharing my students. screen. I would like to thank the team lead Thank you, sir. code, Thank you so much. Kapil sir, Vinay sir, all for guiding our student. And I hope whatever presentation that you have is very much self-explanatory about what the requirements that company and the changing environment in the education, in the recruitment industry right now. Every HR is thinking something differently. And I do appreciate that thought that every company has a different process of thinking about new hires. So your Yes. platform really gonna help all the students. So the students who are interested, the QR code has already been displayed. Also, the same is available on our LMS portal also for next 2 days.
So if you wish to go through this presentation, and your friends who are missing this presentation, because we have 1026 views till now, so those who are missing it, they can definitely go and watch this presentation for next 2 days. And if they are interested, they can directly register through them. Okay, with this note, I would like to thank you again for the team LeadCode, and we conclude this session. Thank you. Thank you so much, sir, Yogesh sir, Thank for you, this sir. opportunity. Thank you so much, all the students. Happy Sankranti once again. Thank you.